ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणपति स्तोत्रराज। श्री गणेश पुराण के उपासना खंड के अध्याय 13 में ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा श्री गणेश जी महाराज की स्तुति किए जाने का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान श्री गणेश जी के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन है। इस स्तोत्र को स्तोत्र राज की संज्ञा दी गई है। इसे सर्व सिद्धिदायक स्तोत्र माना गया है। जो भी बुद्धिमान प्राणी प्रातःकाल उठ करके भक्ति युक्त पवित्र होकर इसका पाठ करता है या इसे केवल श्रवण करता है, वह सुंदर संतान, अपार धन-धान्य, लक्ष्मी और समस्त मनोरथों को सिद्ध कर लेता है, क्योंकि वह भगवान श्री गणेश जी की कृपा का पात्र हो जाता है और अंत में वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस पावन स्तोत्र को श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऊचुः अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तो महारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिः सुधाश्राविणीभिः दिनेशांशु
सन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वहुं वर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुं
अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तोमहारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधाश्राविणीभिः दिनेशां सुसन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो भ्रान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वमुं वर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासिकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं
जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तोमहारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधाश्राविणीभिः दिनेशांशु सन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो भ्रान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वहुवर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमानं
गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तो महारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधाश्राविणीभिः दिनेशांशु सन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो भ्रान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वहुवर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने
कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः तमस्तो महारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधास्राविणीभिः दिनेशांशु सन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः त्वदीये मनस्था
पयेदङ्घ्रियुग में जनो विघ्न संघान पीडां लभेत लसत सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो ध्वान्त पीडां कथं वा लभेता वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वमुं वर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः तमस्तो महारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधाश्राविणीभिः दिनेशांशु सन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः
प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वहुं वर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामि।
तमस्तो महारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधाश्राविणीभिः दिनेशांशु सन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वमुं वर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। जगत्कारणं कारणाज्ञानरूपं शुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। रजोयुगतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः।
सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिनरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रौद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तो महारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरौषधीस्तर्पयन्तं करोघैः सुरौघान् कलाभिसुधाश्राविणीभिः दिनेशां सुसन्ताप्यहारं द्विजेशं सशङ्खस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीसादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत् सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लभेता। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगात् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिं वमुं वर्षपूगान् इदानीमिवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मामुने कृपया परयोपेतो विधातुं तां प्रचक्रमे।